तीसरा पैनल डिस्कशन है, उसका टॉपिक है द इम्पोर्टेंट ऑफ फाइनेंस, जिसमें स्टेज पर मैं बुलाना चाहूंगी वैभव पोरबॉल को, फाउंडर ऑफ डिजर्व इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा मैं बुलाना चाहूंगी कौस्तुभ मजुमदार जी को, हेड एंड एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पायनियर बैंकिंग, इंडसइंड बैंक। Please come on stage. Apart from these two guests, we are having Mr. Paresh Thaparia, who is Senior Vice President of IndusInd Bank, who is expert of financial services and in banking. Mr. Praveen Dwivedi, we have, who is founder of Avok India Group. तालियां हो जाए, जोरदार स्वागत। और इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं शेखर सुमन जी को एक बार फिर मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज कम ऑन स्टेज। इस तीसरे पैनल को हम आगे बढ़ाएं। और इस सब के बीच आप सभी को ये जानकारी दूं, अब से थोड़ी ही देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगी श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हु इज होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब से थोड़ी देर के बाद हमारे बीच होंगी, जिनसे विभिन्न पहलुओं पर बात होगी। फिलहाल इस सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं शेखर सुमन जी। ओवर टू यू। कौस्तुभ जी, राइट। परेश, आप उधर बैठ गए। ओके, सो लेट मी टेयर दिस ऑफ। And Praveen Dwivedi, you're Praveen Dwivedi. All right. So you, Paresh. तुम वैभव, or you last. Okay. सब ठीक है? नहीं चलता है। Cut for seat. नहीं। How do you pronounce your bank's name? IndusInd Bank. Yes. All right. लोगों की थोड़ी कमी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उत्साह में कमी हो। आप लोग तालियां बजाएं इन लोगों के लिए। ये भी they are the great achievers of our country and they have carved a niche for themselves। और बहुत मेहनत से और मशक्क़त से ये लोग यहाँ पर आए हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ये बातचीत कौस्तुभ मजुमदार जी से, who is like a एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एट इंडसइंड बैंक। मैं इनसे प्रोनाउंसिएशन पूछ रहा था, इन्होंने बताया मुझे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन वैसे ही। इस अपने पहले तो आप खुद ही बताएं इस बैंक के बारे में, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू टॉक अबाउट योर बैंक एंड हाउ फार यू हैव रीच्ड फ्रॉम द पॉइंट यू स्टार्टेड। जी, माइक ले लें। Thank you, Shekhar ji. Thank you so much. So friends, IndusInd Bank is today the 5th largest private sector bank in the country and the 8th largest across nationalized and private sector banks in the country. भाई इसके लिए पहले तालियां आप लोगों को बजानी पड़ेगी। 5th largest, ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। and he's got like behind him 35 years of experience, you know, which is like saying a lot. तो पहले तो इनको ध्यान से सुने और ये क्या बता रहे हैं और इस बैंक से कितना फायदा आपको हो सकता है वो आगे बताएंगे। Thank you. In fact, we were the only bank in the private sector space, other than the large 4 banks, who never did an acquisition in the past. So, of late, some of you may know, some of you may not know, IndusInd Bank has gone and acquired the entire Reliance Capital business, which has a plethora of financial services from broking to insurance, etc. So now the bank has started growing inorganically along with one of the largest asset management companies of US, which is also very big in India, Invesco. So the bank is really now at an inflection point where we are going to ensure that we no more remain the 5th largest, but get into the top 3 of the country. What are the challenges that you're facing now? What are the enormous challenges that you're facing, and what are you doing to overcome them? Banking sector mein, what are the challenges? Absolutely. So some of the challenges that banks are facing today
including IndusInd Bank, I would say is a very steep chase for low-cost deposits. Ultimately, a bank's lending rates are determined by the cost of capital. At what rate can we raise savings account, current account, etc. So that is where we are seeing a very big challenge, because suddenly many of the clients, instead of keeping money with the bank, they are moving it into the mutual funds. They are seeing a lot of great returns. Money is moving there, and that is becoming a very, very big challenge for most banks, including our bank. As a result of which, banks are forced to raise the deposit rates, which is a big bonanza for customers. And So- is it especially in, in these volatile, yeah. So I think a bank's balance sheet has nothing to do with the profitability. Oh, A bank's balance sheet as large as 10 lakh crore, 20 lakh crore, whatever. Unlike other businesses where the profitability is determined by the balance sheet size, in a bank it does not matter. Why it does not matter is that you can easily increase your balance sheet size by making a lot of corporate loans. But these corporates, when they come and borrow, they borrow at such wafer-thin margins that you are hardly able to make much profits out of it. So a bank's balance sheet is primarily dependent on the quality of asset or the texture of asset, which is more in the retail banking space. On the retail loan side, so the retailer, the people, for example, sitting here, many of you would be taking an auto loan, a housing loan, a small business loan. Those are places where the banks make maximum money. Whereas when you lend 10, 20,000 crore to a specific corporate, they will squeeze you out completely. So currently, the balance that Shekhar is talking about right now is clearly on the texture of the asset, where banks are moving from a corporate balance sheet to a retail balance sheet. And in a volatile market like now, where interest rates are moving very swiftly, a retailization is going to help banks become more profitable. So, would it be safe to say that they are exploiting you, the corporate houses, the big ones, and in turn you are exploiting the common man? Absolutely. I certainly, I definitely agree. We are custodians of your money. Yes. As the custodians of your money, we have to completely remain guided by what he just said. How do you make sure that the customers repose enough confidence in a bank, considering there have been so many bank scams, huge loan scams, and people have, taken money and become a defaulter? How do you prevent that? Okay. So I think the question that's coming up really is, in fact, this is a very good question, because on an average day today, our bank alone receives over 400 cyber fraud complaints. 400 cyber fraud complaints where somehow the hackers or the perpetrators of fraud has got hold of certain account details, and the customer tends to lose money in some pretext or another. So I really want to warn each one of you. Multiple kinds of calls keep coming. I am calling from the customs, I am calling from the post office, I am calling from a courier company, your parcel has come, XYZ. If one bank gets 400 complaints in a day of money being defrauded, you can understand what is happening
across the 100 plus banks in the country. This is a very, very grave situation. More than anything else, you should be banking with a bank which has very, very robust IT processes and multiple firewalls to ensure that your money is safe with the bank. And that's the message I want to give everybody. How do you keep your money safe? I hope you guys are getting the message, because अगर आप इनको ठीक तरीके से नहीं सुन रहे हैं तो कर फिर आप इनको ब्लेम मत कीजिएगा। तो क्योंकि Absolutely. इन्होंने ये कहेंगे हमने तो आपको बताया था, हमने अपनी बात नहीं सुनी, किसी ने ओटीपी मांगा आपने दे दिया, किसी ने ये मांगा, वो फायरवॉल्स को सब तोड़ के आपने हमारी बात नहीं सुनी। Now you face the consequences. So you have to be, in today's time, it's a very dangerous time. It is getting more and more. More and more. more. So it is not coming down, And your friends. money gets just swiped out, just one mistake of So yours. And there are clients who have lost on a single day Listen more to than 80 crore rupees just from listen their to account. this. Clients who have lost 80 crores. On a single day, 80 crore has got swiped out of the client's bank accounts. My God, so that's this frightening, is the frightening. level of frauds that are happening today on the cyber side. So one has to be extremely careful. What kind of bank, what platform, what firewalls do you have to ensure safety of your money? Vaibhav, thank you so much for all that information. आप ये बताइए, you are into wealth management, which is again like being a bank. They also manage your wealth. What's the basic difference? Wealth management, bank, how is it any different or the same? No, they are very different. Yeah. Am I You audible? need to know that. Yeah. They are very different. From the bank's perspective, bank is looking to mobilize deposits Yeah. and make sure that investors save their money with the banks, which in turn they lend to corporates and individuals. Whereas wealth managers are looking to mobilize money from investors and are looking to invest money across various financial instruments. So those financial instruments could be bank deposits, could be mutual funds, could be equity shares. We are higher than make. So that's the fundamental difference between the two. In terms of the risk that we don't take risk of lending money, but we take risk of investing money in asset classes where returns can be volatile compared to what a bank deposits deliver. So these are two fundamental differences between a wealth management firm and a bank. नहीं, पर wealth management के इस क्षेत्र में what kind of a change that you have seen in terms of technology and data-driven strategies? No, absolutely. So, Shekhar, when I started my career 20 years ago, life was simple and very few instruments to deal with, very few data points to deal with. But when I look back and look at how life has changed around us because of technology, we can order anything in 10 minutes, we can get access to everything that we want to within a day's time. And the convenience, what he spoke about, convenience and the risk. Through the banking app, you can execute innumerable transactions within a matter of seconds. Similarly, in wealth management also, from the client's perspective, in last 20 years, the biggest revolution which has happened is in creating reach. Now we can reach out to investors across the country without any hurdle by using technology. Second big advantage of technology for the investors is getting quality advice regardless of which location or which part of the country you live in. When I started my career, there were only 4 or 5 countries in which wealth management was prevalent. Now we are getting clients from the smallest cities in the country. So reach is one problem that technology has solved for us. As a wealth manager, the biggest issue that we faced with, and I heard you talking to Sudeep about too much information being available and too much distraction. When we use data, our biggest challenge is how do we remove noise out of information? 90% of our work is removing noise out of information. There is so much information which is available. Actually, you have to, it's the other way around. You have to remove the little bit of information from the noise that you get. Absolutely. So abstracting away noise from data is where technology plays an important role.
We analyze more than 3 million data points on a daily basis, and less than 1% of that data point is relevant. That's what I'm So saying. how do we remove the unuseful data out of this bombarding of information which is coming our way? That's where data and technology plays an important role. Third thing which allows us to do better is to manage portfolios better for our investors. Without using technology, we can't manage money for so many investors in a standardized and customized manner. Humanly, it's impossible to do that kind of analytical work and deliver similar kind of experience to multiple investors. So these are some of the things that technology allows us to do. वैभव, पहले तो अलग अलग चीज़ की चोरियां होती थी, पैसों की चोरी हो गई, गहनों की चोरी हो गई, गाड़ी ने चोरी कर लिया, कभी कभी रिश्तेदार भी चोरी हो जाते थे. आजकल डेटा की चोरी होती है. How do you prevent that? I mean, as I was talking to him, we are in a very strange kind of situation कि आप करें तो क्या करें और क्या नहीं करें, क्योंकि despite doing everything, there's still a possibility that the data would be misused. So you have to invest a lot of money in ensuring that data of your customer is secured. Yes. Make sure that your IT infrastructure is top notch. Make sure that you put in place enough safeguards to ensure that there is no compromise on data. What we have done is to go to best agencies and get them to audit our IT infrastructure and security processes. That is the only way you can secure your users' data. As you rightly said, that's the most valuable asset that we have, and we have to make sure that we put in place enough safeguards to ensure that security is maintained. You know, the funniest thing is इतने सारे security measures हो गए हैं अब कि उनको पार करते करते थे, या तो आदमी कहता है मुझे करना ही नहीं है, मर जाता है वो उसका वेट करते करते. He doesn't want to do it. There's so many of it, and digitally, it drains you out. There's so many layers that you have crossed, the firewalls, etc. ये, and at the end of the day, the man says, I am not interested, boss. ये तो मुझसे होगा नहीं. But that's the way it is. That's the way the cookie crumbles now. And अगर आपको safety चाहिए, तो फिर you have to go through layers of security. But that is our responsibility, right? So as a customer, we have to deliver the right experience. But at the same time, we have to ensure that we are doing our work properly to make sure that there is no compromise on that front. No, even for instance, when you go to ask for a loan, there's so many layers to it. And despite that, the ones who just run away with the money they do, and the ones who are needy don't get around to getting that money because उनको ये कैसे वो कैसे ये पेपर वो पेपर ये सवाल वो सवाल, all of that, it's very disturbing. But वो है तो है, अब there's nothing you can do about it. What do you do about the NPAs? One good thing that has happened now is this CIBIL score. So I know. पहले क्या होता था, we really had to go through a lot of challenges कि किसको देना किसको नहीं देना. But that has now become a guiding factor for us. पर I'll stop you right here. ऐसा होता है अक्सर कि जिनको नहीं देना उन्हीं को आप लोग अक्सर ज़्यादा दे देते हैं और जिनको मिलना है उनको नहीं मिलता है. I'm so happy that you're honest enough to accept that. Yes, but that's happening. It's all about power and muscle, etc., and being very smart. परेश जी, बैंकिंग एंड सब बैंक वाले सब पैसे वाले लोग हैं, मतलब आई एम इन ऑगस्ट कंपनी, आई एम रियली फीलिंग रिच नाउ. आप सब बैंक वाले हैं, सबसे मैं अलग से लोन मांगने वाला हूं. प्रवीण, you want to ask me or Praveen? नहीं आप Praveen or हाँ परेश बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. Oh, that's you. Okay, you talk about Paresh, about your expertise and tell people what you do. So, I've been in banking and financial services for 27 years now. I've worked across multinational banks, large Indian private sector banks. And I think banking has evolved a lot in the last 3 decades that I have witnessed. Primarily from being a core finance to also as an industry. If you today look at, it's a phase where a student once enters a phase may not necessarily be an expert in financials or reading a balance sheet. Because if you look at any industry, we spoke about a lot of industries around here. So you produce something, you distribute something, and you service something. In banking, the best part is that you are able to create all facets of a profession that you want to take. The experience somebody gets across to understand what is that I want to do in career. Banking offers that great platform. Great platform.
from a back end to a front end to a sales to a strategy to planning to execution to understanding finances to go reaching out to promoters, not only from a lending or a borrowing perspective, but also from how to be more concerned about money and manage money. So I have been doing this. I've been part of corporate banking from trade finance to wealth management across and worked across various geographies in India. And what I've gathered is the story that's building up now is great for anybody who wants to be really building a career ahead. And this is one platform which offers you across industry, across sectors. Whether it's an engineer or a finance expert or art guy, is one space which offers varied career options to you. How do you communicate with the common man? Common man is not quite well versed with all these technical jargon. ऐसा लगता है कि लोग उलझा देते हैं. They don't have a damnedest idea about what equity fund is like, or mutual fund, or debt fund, or anything, or liquid fund. कुछ उन्हें मालूम नहीं, लेकिन उनको बताया देखो, और वो ध्यान से झूठ मूठ का हाँ करता रहता है. Yes, all of that, because बड़े-बड़े लोग बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के बड़े-बड़े jargons यूज करते रहते हैं. The common man is not well versed, as I said, not aware. Can you make the communication simpler? Yes, so I think common man के लिए अभी बैंकिंग में बहुत सिंपल हो गया, बिकॉज पहले क्या होता था, आपको एक समय निकालना पड़ता था बैंक जाने के लिए. लोग एक कुछ इंडस्ट्रीज बंदा रखते थे जो सिर्फ बैंक जाने के काम के लिए होता था. अभी टाइम्स बहुत बदल गए हैं. आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है, अवेयरनेस इतना बड़ा है कि यू आर टू अ लेवल ऑफ वेल इन्फॉर्म्ड. नाउ दैट डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्म्ड एंड वेल इन्फॉर्म्ड इज अ ब्रिज which a banker has to build in terms of customer's custodian. And over a period, we have seen that you don't need that years of large experience of 15, 20 years or so, but a 4, 5 years old banker also understands how much he values what's happening, because there is a constant upgradation happening. We believe technology upgradation. I think the information upgradation is also very big. और same customer और banker के लिए उस चीज़ की value समझना और उससे relate करना अपने पैसे के लिए अब बहुत ही सिंपलर होता जा रहा है. यस, देयर आर इंस्टेंसेस व्हिच वी डिस्कस्ड, मेंशन एंड ऑल, बट अवेयरनेस और थोड़ी सतर्कता वो बहुत ज़रूरी है. और मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादातर जैसे वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट लार्जली मेरे 27 साल के एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा वो ये है कि आई वर्कड इन बॉम्बे, आई वर्कड इन गुजरात, आई वर्कड इन पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एंड ऑल दीज स्पेसेस, एंड आई हैव सीन ज्योग्राफी वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन द वे पीपल अप्रोच. Whether you are in a state of a Punjab or Haryana or you are go down south, there is huge difference. मेरा ही मानना है कि इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी और उसका करेक्ट यूज वो बहुत ज़रूरी है, जो शायद आप अपने बैंकर के साथ बैठ के एक सिंपल लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं. जार्गन की ज़रूरत नहीं है. शेखर जी, अगर आप देखेंगे तो 90s के और 80s के दशक में आरडी किया करते थे लोग, आज सिर्फ एक बेसिक आरडी की तरह हो गया है, यू नो. और एक हर एक को अवेयरनेस है. Now, knowing about debt, equity, asset, it is not about return. Wealth management is more about managing asset, not managing return. While you're doing business, creating assets, it is more about giving the right direction to asset, growing the asset, not showing returns to that. I'll ask the same question to President of Oak India Group. एक second. सब finance के लोग बैठे, and I'll probably ask you the same question and sum it up. Financial literacy and financial awareness कितना ज़रूरी है और क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी. मैं आप सबसे एक बार अनुरोध करूंगा कि शेखर जी के लिए तालियां बजा दीजिए. बहुत जोरदार मनी है, मसाला है, सब पे ये जुड़े हुए हैं. जितना डाइवर्स काम इन्होंने किया है अभी तक बैठ के 3 पैनल में, मुझे लगता है ही डिजर्व्स अ बिग अप्लॉज. एंड मनी और फाइनेंस की जहां तक वित्त की बात आती है, मैं थोड़ा हिंदी में रखूंगा क्योंकि मेरा जो अंग्रेजी बोलने का कोटा है वो विदेशी बैंकों में काम कर करके ख़त्म हो चुका है. जैसे आप शक्कर खाते हैं ना तो ख़त्म हो जाता है डायबिटीज़ से, वैसे मैंने भी हांगकांग बैंक में काम किया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, कानपुर से शुरुआत करी, ANZ ग्रिंडलेज बैंक में तो अंग्रेजी ही बोलना पड़ा क्योंकि अंग्रेजी में ही मेरा इंटरव्यू हुआ, उससे हुआ. तो बात आता हूँ वित्तीय साक्षरता पे. जब वित्तीय साक्षरता की मैं बात करता हूँ और एवोक इंडिया फाउंडेशन की जब मैंने स्थापना करी HSBC बैंक छोड़ करके, तो लोग अभी भी पूछते हैं तुम झंडा खड़ा किए रहते हो, ये क्या होता है, वित्तीय साक्षरता क्या होता है यार, ये बताओ तो जरा. तो मतलब जो बात सभी लोग यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है, जब मैं पूछता हूँ अपने सत्र में कि भाई बताइए कितने लोगों को फाइनेंस से प्यार है, मोहब्बत है, तो एक भी हाथ नहीं उठता. और मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ कितने को पैसे से प्यार है,
तो सारे हाथ उठ हाथ जाते उठा हैं। देते, हाँ। तो ये जो चीज है, हम लोग कर क्या रहे हैं, अभी मैं पटना में था 2 दिन, पटना में 2 दिन में, कल ही रात में आया पटना से, फिर यहाँ बहुत ही मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह के रिनाउंड इंस्टीट्यूट और इतने ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, जयपुरिया एक ऐसा संस्थान था, हर एक के दिल में अभिलाषा होती है कि जयपुरिया में एडमिशन हो जाए, तो एक बार ताली जयपुरिया के लिए बजा दीजिए आप लोग जोरदार। ये एक शिक्षा संस्थान ऐसा है जहाँ के लिए एक एस्पिरेशन होती है किसी भी मिडिल क्लास और इवन हर क्लास के व्यक्ति में कि उनका बच्चा यहाँ आ जाए। वित्तीय और बिहार में है, के देवरिया में हमारे सेंटर हैं, गोंडा, बहराइच, मथुरा। तो यूपी में करीब 14 जिले में, बिहार में 12 जिलों में, सब मिलाकर के करीब 110 सेंटर में हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है इसकी इतनी ज़रूरत है कि आज भी मुझे खाता खुलवाने के लिए, पति की डेथ के बाद अपना क्लेम के लिए कोई महिला जाने में बहुत परेशान होती है। तो ये जो आज भी हमारे देश में, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50 करोड़ जनधन अकाउंट खुलवाने के बाद जो काम किया है, उसके लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए। जो सैकड़ों सालों में नहीं हुआ। 500 मिलियन अकाउंट्स, 50 करोड़ अकाउंट जनधन खातों के द्वारा खुले। और हम जब जाते हैं आज वहाँ पर देखते हैं गाँव में, तो जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है, जो आर्थिक आपका जो संबल है, उससे लोगों में अब बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है और लोग धीरे धीरे मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। एक तरफ हमारा स्टॉक मार्केट है, एक तरफ हमारा कैपिटल मार्केट है, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं तो उनका एक अवधारणा अलग है, वहाँ पैसा बन रहा है। नीचे कैसे हम उस चीज़ को लाएं और जोड़ें, ये हमारा आज काम है और मुझे लगता है इसमें बहुत काम करना बाकी है। तो इस सब के लिए हमारे आज माननीय मंत्री जी भी हैं यहाँ पे और आप लोग भी हैं, बहुत बहुत आपको। तो मुझे लगता है सरकार का, शासन का, समाज का ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि हम वित्तीय साक्षरता से जुड़ें। चलिए, वक्त का तकाजा है, हम चाहते हैं कि आप यूं ही बोलते रहते, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू स्टॉप। नेताजी पधार चुके हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आने का, एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों का बातों से तो ये लगा कि हम लोग एक बड़ी तेज़ी से एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं और जा रहे हैं, और इसमें जो सतर्कता और सजगता जो हमको बरतनी चाहिए हम बरतेंगे। और प्रॉब्ली ऑल ऑफ दिस वुड लीड टू जस्ट वन मैक्सिम, जैसे वैभव ने अपने पोर्टल का नाम रखा है, डिजर्व, यू गेट इन लाइफ व्हाट यू डिजर्व। थैंक यू सो मच। So much. Thank you. थैंक यू। अब आगे फिलिटी से आप रहिए, फोटो आप। अब आगे मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अगले पैनल के लिए हम बढ़े, उसके साथ ही डायरेक्टर ऑफ गोल्डी मसाला संदीप गोयनका जी, प्लीज कम ऑन स्टेज, एंड जय अग्रवाल, एमडी ऑफ ज्ञान डेयरी। सुदीप गोयनका जी हमारे साथ स्टेज पर हैं, हु इज डायरेक्टर ऑफ गोल्डी मसाला।
और इस बीच हम सभी के साथ अतुल तिवारी जी हैं, जो एक जाना माना चेहरा, अभिनेता। जोरदार स्वागत, तालियां हो जाए इनके लिए भी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस प्रांगण में, जहां जी न्यूज जयपुरिया बिजनेस लीडरशिप कॉन्क्लेव को आज हम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।